हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 500। दिस इज़ द डेजर्ट स्टॉर्म एंड वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल बाइक विच वी हैव। सो इस बाइक पे रिसेंटली मैंने ट्रैवल किया था फ्रॉम पुणे टू कन्याकुमारी, दैट इज़ 1500 किलोमीटर्स, एंड इट वाज रॉक सॉलिड एट दैट टाइम। रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है बाइक का। इवन इफ़ यू एक्सेलरेट एट थर्ड और फोर्थ गियर, स्टिल द बाइक पिक्स अप और बूस्ट करके एकदम ओवरटेक कर लेती है। एंड दिस इज़ द एक्चुअल इंजन। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट बाइक जो लॉन्च होने से पहले मैंने बुक की थी, एंड इट इज़ द हैंड असेंबल्ड बाइक। सो इनिशियली जो भी बाइक आ रही थी, दोज वर ऑल हैंड असेंबल्ड when it just got launched. It has a disc brake in the front and the drum brake. The engine and all wiring look little clumsy, but still it works just fantastic. This is the battery. This is the place where you keep the toolkits. ओरिजिनल हॉर्न जो बाइक के साथ आया था, एंड दिस इज़ द गार्ड विच। इस साइड से भी बाइक का लुक देख लेते हैं। सो आई एम श्योर व्हेन ये बाइक कहीं सिग्नल में रुकती है, कोई भी ड्राइव कर रहा होगा, तो पीपल देखते हैं उसे एंड दे आस्क अबाउट द बाइक। दिस इज़ द ओरिजिनल की दैट वी गेट विद द बाइक, द रॉयल एनफील्ड। Let's see. I'll put the key. So key डालने के बाद this is the engine cut off and start. So for now I have stopped it, and once we start it, it takes some time so that it do the basic check and oil सब जगह पहुंच जा रहा है कि नहीं बाइक में। Once the light goes off, we are good to start the engine.